So hi, good evening everybody. Welcome to this session. Today in the evening, this evening, I have planned to go for a legal reasoning passage. As you could see that in the examination, you are definitely going to see number of passages in legal reasoning format, and each and every passage would be followed by 5 to 6 questions. Usually 5 questions in every passage. So you'll be having around 35 to 40 questions in the passage in the legal reasoning format, in the legal reasoning section, and you have to solve all of them. So आप ये मान सकते हैं that in every passage there is a thought to be given to you. The thought would be something which is based on certain legal inclinations. So you need to hold a legal bent of mind. Doesn't mean that you need to have a prior knowledge for that particular topic. But when you read that passage, you will be finding each and every elements to be required to solve that passage. Okay. So too much of studies for legal reasoning paper is not at all required to be done. The only thing that you need to do here is to read the passage properly. Now the question is why people go for legal reasoning studies, not only torts, law of torts, but the law of contract as well, and sometimes law of crime as well. Because that when you have certain things clear in your mind, and it is not at all required to read the passage sometimes, but you would always also find that these days the passages that are coming to you in the examination are not only required to read them but also to understand them. So if you have a prior knowledge of certain legal elements in your mind, then you are able to catch those passages very quickly and you are able to solve them. So today I have kept one concept particularly for this session, and on the basis of that you have to solve some 5 questions on that. So let's go for the passage first of all. This is a very simple passage. You could see that the length of the passage is also not very big. A very small passage is written, and if you read them up, you'll be finding around 300 words, somewhere close to that. And when you read this passage, you will find certain substantial data, certain substantial information, and based on that, you are supposed to find out the answers of some 5 questions. So let us read this passage. Ayaram Gayaram was a phrase that became popular in Indian politics after a Haryana MLA Gaya Lal changed his party thrice within the same day in 1967. But Purana case, when you read the whole story, you will find it is very crucial in the today's circumstances. The anti-defection law seeks to prevent such political defections which may be due to reward of office or other similar consideration. So look at this. You must have seen that in the government this is a very normal thing which has become in the 21st century. एक पार्टी का कोई लेजिस्लेचर छोड़ करके दूसरे पार्टी में चला जाता है प्रलोभन के कारण. There could be certain amount of affiliations, there are certain amount of reward, monetary reward के लिए, there could be possibility of getting lot of money, and not only that but a position in the ministry. तो आप देखोगे कि जो लेजिस्लेटर्स है वो एक पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में चले जाते हैं किसी प्रलोभन के कारण. तो ये तो गलत है, बिकॉज इट इज ए थ्रेट टू द गवर्नमेंट. द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑन द स्टेक. तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए हमारे पास कानून नहीं था जो बाद में हमने बनाया. ओके ऐसा नहीं होता ना दैट यू हैव टेकन द पब्लिक वोट एंड यू हैव बिकम इलेक्टेड ऑन ए सर्टेन प्लेस, और आप पार्लियामेंट में बैठे हो या स्टेट लेजिस्लेचर में बैठे हो, और उसके बाद अचानक से आपको कुछ होता है और आप पार्टी चेंज करके दूसरे पार्टी में चले जाते हो. यू कैन नॉट एंजॉय द सेम रेपुटेशन, यू कैन नॉट एंजॉय द सेम थिंग्स दैट यू आर एंजॉइंग. तो ये तो गलत है, सही भी नहीं है. तो इसके प्रति कानून बना था, दैट वाज कॉल्ड एज एंटी डिफेक्शनल लॉ. कब बना था? द 10th शेड्यूल वाज इंसर्टेड in the constitution in 1985 in the 52nd Amendment Act, and sets out anti-defection law of India. The anti-defection law provides that legislatures may be disqualified on the grounds of defection by the speaker of a legislature based on a petition by any other member of the same house. Anti-defection law basically is applied to both the parliament as well as the state assemblies. पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा दोनों में लागू होगा, एंड सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर में भी ये इक्वली लागू होगा. ठीक है ना. A legislature is deemed to have defected if he either voluntarily gives up the membership of his party or disobeys the directives of the party leadership on a vote.
This implies that a legislature defying matlab abstaining or voting against the party whip on any issue can lose his membership of the house. आपने देखा होगा ना, कई बार पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस अपना स्टेटमेंट देने से कतराते हैं. यदि उनके पार्टी में जो भी पार्टी का हेड डिसाइड करता है या पार्टी मीटिंग में जो भी डिसाइड होता है, every other member of the party is going to follow that. This is important. That is called as a decorum of the party. In order to bring stability in the party also, no? You cannot have too much of opinion in the party. Too much of judgments in the party will destroy the party completely. So you always try to keep somebody to be the head of that party, taking major decisions as to what somebody has to speak in public, in media, whatever. तो आप अपने मर्जी से अपना स्टेटमेंट नहीं दे सकते हो. You maybe have a difference of opinion on a particular theme or on a particular subject, but you cannot be very vocal to public just like that. तो उसको आप नहीं दे सकते हो. यदि आप दे रहे हो पार्टी के अगेंस्ट में, पार्टी ने कुछ अपना प्रोटोकॉल फॉलो किया, पार्टी ने कुछ मैंडेट तैयार किया, बट यू डू नॉट बिलीव दोज मैंडेट, you however you do not believe those mandate, you are not allowed to speak out in public, you are not allowed to speak out in media, right? ऐसा नहीं होता है. आप जिस पार्टी को फॉलो करते हो, you have to follow the constitutions or the principle of that party, जो भी इस पार्टी ने बनाया है. तो डेकोरम आपको मेंटेन करना होना चाहिए, ठीक है ना. आगे देखते हैं. द लॉ अप्लाइज टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज. लेजिस्लेचर में चेंज देयर पार्टी विदाउट द रिस्क ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस. इट ऑल्सो डज नॉट मीन दैट इफ आई एम working in a particular party and over a period of time I don't feel like working with the same party, but I would like to go to some other party. Okay, maybe sometimes you have lot of difference of opinion and you are not feeling okay working with the same party, so you would like to go to some other party. There is always a possibility. ठीक है भाई, जैसे फैमिली में डिवोर्स हो जाता है, कोई किसी के साथ रहना नहीं चाहता तो डिवोर्स लेके आप जाओ. जैसे आपने डिवोर्स नहीं लिया एंड यू आर मेंटेनिंग ए सर्टेन रिलेशन विद समबडी एल्स, इज नॉट गुड ना. तो यहाँ पर भी वैसी है भाई, यदि आपको जाना है तो देर इज ए पॉसिबिलिटी आप जा सकते हो, ठीक है ना. बिकॉज इफ यू नॉट ओके विद द पार्टी और द मैंडेट ऑफ द पार्टी, सो यू कैन गो टू अनदर पार्टी. तो कैसे सर्कमस्टेंसेस है, कहाँ पर ऐसे होगा, यू कैन चेक दिस आउट, ठीक है ना. द लॉ अलाउज ए पार्टी टू मर्ज विथ और इन टू अनदर पार्टी प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेचर्स आर इन द फेवर ऑफ मर्जर. In such a scenario, neither the member who decide to merge nor the ones who stay with the original party will face disqualification. 2/3 of the members यदि एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, in that case जो जा रहे हैं वो भी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे और जो रह रहे हैं दे आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी डिस्क्वालीफाइड. मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि सर पार्टी मर्ज हो रही है फॉर एन एग्जाम्पल, तो जो रह जाएंगे जो अपना डिसीजन ये रखेंगे कि नहीं हम नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो टू सम अदर पार्टी, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, तो वो रह सकते हैं, उनको वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे. द लॉ प्रोवाइड्स फॉर ए मेंबर टू बी डिस्क्वालीफाइड इफ ही वॉलंटरली गिव्स अप हिज मेंबरशिप. हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरप्रेटेड दैट इन द एब्सेंस ऑफ ए फॉर्मल रेजिग्नेशन, लुक एट दिस लाइन, इन द एब्सेंस ऑफ ए फॉर्मल रेजिग्नेशन बाय द मेंबर, द गिविंग अप ऑफ मेंबरशिप कैन बी inferred by his conduct. For instance, party members who have publicly expressed oppositions to their party or support for another party were deemed to have resigned. Somebody who has not given resignation to the party in writing but have spoken something bad or something absolutely against the party, for an example, showing an inclination towards another party. So Supreme Court says this deemed would be considered as the person has already been resigned in the party. तो ये एक implied resignation माना जाएगा. ओके, तो ऐसे जगह पर ये डिफेक्शन का रूल भी लगेगा. मतलब पार्टी में लिखित में रेजिग्नेशन न देकर यदि आपने कुछ बोल दिया तो भी आपके ऊपर ये एक्ट लगेगा, एंटी डिफेक्शन एक्ट लॉ आपके ऊपर लगेगा. हाँ, यदि आपने पार्टी में रेजिग्नेशन दिया और उसके बाद जाके पब्लिकली आप कुछ बोल रहे हो अगेंस्ट द पार्टी and you are going to some other party, showing your inclination towards another party, that would be okay. But बिना resignation दिए, अपने आप को बिना detach किए, you cannot go to some public forum and would speak absolutely wrong about the party. ये आप नहीं कर सकते हो. ऐसा करोगे तो आपके against में anti defection law 100% लगेगा. Now coming on to the understanding, when you read this passage, yeah, remember that when you have the idea about anti defection law completely, sometimes it is not at all recommended to go for the whole passage and then to make your mind as to how somebody can solve the questions.
if I have the prior understanding of the topic, because some of the topics are absolutely going to become very common after a preparation. जब आप prepare करोगे, prepare करते करते एक time ऐसा आएगा that you will feel like that yes, I have the knowledge or the understanding of most of the topics, so I am able to figure out the answers of the questions. I would like to directly go to the questions. तो आप ऐसा कर सकते हो, but make sure कि जो passage है उसके अंदर की theme आपको पता है. Now look at the first question. One Miss Zinde was holding the position of the Minister of Agriculture within a particular state. The state government passed some laws which were against the interest of the farmers, according to Zinde. So she publicly expressed her opinion to the laws passed and supported the cause of the farmers who were protesting against those laws. All of this was done by her after tendering her resignation. So would Zende's action amount to defection? Assume that all portfolios are held by the people from the same party which has formed the government in the state in question. Now look at this. She has spoken something against the party only after giving her resignation. So therefore, I don't think so that she would be definitely be charged for such act. So therefore, if you look at it, you will find out the answers. Yes में तो होगा नहीं, तो दोनों automatically out हो गए. Because आपका आंसर yes में होगा कि no में आएगा, you have already gone to that situation. तो yes में तो नहीं आएगा, so it's all out. Now no, because her public speeches were made after her resignation from the post. और ये बोला no because she has the right to freedom of speech. Now this particular option D has nothing to do with the passage. So the best option right now is option number B, no because of her public speech were made after her resignation from the post. So the right answer at this particular point is option number B. आप option number B को right करोगे. So this is the right answer. Now let's go to the next question. देखते हैं इसमें क्या दिया है. अगला क्वेश्चन दे रहा है. One Mr. Amar moved an anti-defection motion against Namit as the latter was allegedly intending to change parties after the elections. ठीक है. The motion was passed by the House and Mr. Namit stood disqualified. Was that disqualification valid? अच्छा, the motion was passed by the House. तो आपको पता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ में यदि पार्लियामेंट है तो वहां पर स्पीकर करेंगे, लोकसभा में है तो जहां पर चेयरमैन है वहां पर चेयरमैन करेंगे. मतलब द मोशन कैनॉट बी पास्ड बाय द हाउस, इट शुड बी ओनली बाय द अथॉरिटी. सो इट वाज नॉट डन विद द अथॉरिटी. सो देयरफॉर उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो वैलिड नहीं है. अब देखो इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है. मेरे ख्याल से बी और सी में से कोई आएगा. यस तो होगा नहीं, तो यस ऑटोमेटिकली आउट हो गया. सो आई एम हैविंग ओनली टू ऑप्शंस, ऑप्शन बी एंड सी. दोनों में से कोई एक आंसर होगा. नो बिकॉज मिस्टर नमित वाज येट टू चेंज हिज पार्टी. मतलब उन्होंने अभी पार्टी चेंज नहीं किया, चेंज करेंगे तब जाकर के उन पे एंटी डिफेक्शन का लॉ लगेगा. नो बिकॉज मिस्टर नमित वाजंट डिस्क्वालिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी. दिस वुड बी द मोस्ट राइट आंसर. So therefore the answer to this particular question is option number C. I hope this part is clear. Not very tough questions, very easy questions. If you have the idea about the questions, you are able to solve all of them one by one. Come to the third one. Based on the passage, decipher the meaning of the phrase party whip. देखो पार्टी whip का मतलब कि पार्टी क्या तय करती है. पार्टी जो तय करती है सबको मानना पड़ेगा. If we all belong to the party, okay, and in a party meeting something has been decided, okay, and the chairperson has said that this is to be done and we will follow this particular regime or we will follow this particular principle और हम इस fundamentals पर चलेंगे. Everyone have to follow that. आप मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, even if you have a difference of opinion. तो decipher करते हैं. A party who sits with a whip in the legislature to ensure that every party member acts according to the norms of his party. A person who issues directions to the members of its parties within the house. The directives issued by a party to its members which must be adhered to. तो इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट पार्टी विप से रिलेट करता है? द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पार्टी विप. ए पर्सन हु सिट्स विद द विप इन द लेजिस्लेटर टू एंश्योर दैट एवरी पार्टी मेंबर एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द पार्टी. देखो इसकी मीनिंग है ना, पहले वाली की मीनिंग कुछ अलग ही निकल रही है. विप का मतलब होता कूड़ा, कूड़ा मारते ना, मतलब एक बंदा जो कूड़े के साथ बैठा हुआ है लेजिस्लेचर में ये देखने के लिए कि हर मेंबर पार्टी का उस नॉर्म के साथ डटा हुआ है. ऐसा तो कुछ नहीं इसका मतलब.
व्हिप का मतलब होता है कि पार्टी ने क्या डिसाइड किया है, ओके, पार्टी ने क्या अनुदेश जारी किया है जिस पे पार्टी काम करेगी, मैंडेट क्या है उस प्रकार से। तो ए पर्सन हु इश्यूज अ डायरेक्शन टू द मेंबर्स ऑफ द पार्टीज विद इन द हाउस, या द डायरेक्टिव्स इश्यूड बाय पार्टी टू इट्स मेंबर्स, भाई किसी को तो अथॉरिटी मिलेगी कि आपको ये बोलना है कि पार्टी के सारे मेंबर्स को ये फॉलो करना है। हम बाहर जाकर ना तो मीडिया में ना तो किसी और जगह पर कोई अपने मन से स्टेटमेंट देंगे, जो हमने डिसाइड किया वही करेंगे। तो मेरे ख्याल से सेकंड एंड थर्ड वुड गो बेटर, सो देयरफॉर इन दिस केस राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। तो ये आ गया आपका आंसर। सो दिस वे यू आर सपोज टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A member of Lok Sabha named Mr. Tarak changed his political party from Party X to Party Y to get appointed as the Minister of State for Coal. बढ़िया है। One Mr. Pura, being a member of the Rajya Sabha, submits a petition to the Speaker, Lok Sabha, to disqualify Tarak on the grounds of defection. Is this petition valid? भाई देखो, जो मेंबर जिसको आपको डिस्क्वालीफाई करना है वो ऑलरेडी लोकसभा का मेंबर है, ओके, और जो सवाल खड़े कर रहा है वो राज्यसभा का मेंबर है ना। सवाल खड़े करने वाला भी उसी जगह का होना चाहिए। लोकसभा का है तो लोकसभा का होना चाहिए, उसी हाउस का होना चाहिए। राज्यसभा का है तो राज्यसभा का होना चाहिए। तो देयरफॉर मेरे को नहीं लगता कि वैलिड है, तो नो में आंसर होना चाहिए। इनफैक्ट इसमें पहले को छोड़ करके पहला वाला यस है, बाकी तीन नो है। अब इन तीन नो में से राइट आपको ढूंढना है। पहला, नो बिकॉज द एंटी डिफेक्शन लॉज अप्लाइज ओनली टू स्टेट लेजिस्लेचर्स, ऐसा नहीं है, इट इज अप्लाइड टू सेंट्रल एज वेल एज टू स्टेट्स एज वेल। तो पहला वाला तो वैसे ही आउट है, सेकंड वाला भी आउट हो गया। नो बिकॉज मिस्टर पूरब इज ट्राइंग टू सेटल पर्सनल स्कोर्स विद मिस्टर तारक, हैज नथिंग टू डू विद दिस पर्टिकुलर question. No, because Mr. Purab isn't a member of Lok Sabha is the right answer to this particular question, and thereby I don't think that you must have found any kind of difficulty in answering such kind of questions. बहुत simple होता है. Come to the last one. A party named Jan Suraksha Kavach JSK has 90 members. 30 members of the party in order to join another party named Jan Suvidha Morcha split away from JSK. Does this amount to defection? क्या ये डिफेक्शन होगा? पहला, yes, because the number of members supporting the merger is below the threshold limit set by the law. भाई आपको बोला जाता है 2/3 ऑफ द मेंबर्स यदि तैयार है दूसरी पार्टी में जाने के लिए, ओनली देन द मर्जर इज गोइंग टू पॉसिबल। तो 90 का 2/3 होता है 60, यहाँ पर 30 लोग जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये गलत है। दिस अमाउंट्स टू डेफिनेटली डिफेक्शन। तो नो वाले तो आपके वैसे आउट हो गए, यस में से आपको चूज करना है। पहला आपने आंसर बता दिया कि थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, इसीलिए डिफेक्शन होगा। और सी वाला बोल रहा है यस बिकॉज द 30 मेंबर्स हैव जॉइंड जेएसएम इन वांट ऑफ सर्टेन मिनिस्ट्रीज। तो दिस इज नॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू दिस सिचुएशन इज ऑप्शन नंबर ए। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ 5 these questions based on the passage. So every time you would feel that there are 5 questions to be given on a passage, the passage would definitely have a theme and understanding certain rules and regulations that are supposed to be taken into mind. You have to read it properly. There would not be too much of legal jargons to be used. Very simply, when you read it, you will acquire the information, you will acquire the understanding, and you are able to find out the answers of the questions. So this is all that we have. Now, very important announcement to all those people. The current affairs part, current affairs is a very important section for the CLAT aspirants who would be writing this year in December 2022 for CLAT 2023. So this statement, whatever that I'm going to tell you right now, is for all such students जो इस साल 2022 में पेपर लिखने वाले हैं in December में. We have prepared current affairs questions in the form of passages, ठीक है, from April onwards to till date. मतलब यदि मैं टोटल करूंगा तो लगभग आई सपोज करीब 3,500-4 हजार सवाल होंगे इन द फॉर्म ऑफ पैसेजेस. ओके, 3,500 से 4 हजार सवाल. दैट मीन्स एक पैसेज में 5 क्वेश्चंस. यू विल फाइंड 5 क्वेश्चंस इन एवरी पैसेज, और समटाइम्स यू विल फाइंड 4 क्वेश्चंस इन ए पैसेज. बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टेकन दिस वेरी सीरियसली दैट एवरी पैसेज मस्ट हैव 5 क्वेश्चंस इन इट. तो ऐसे करके हमने तकरीबन 4,000 सवाल अब तक बना दिए हैं. अभी तो 1.5 महीना और बचा है. विल बी मेकिंग ऑल दोस क्वेश्चंस टू. और ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे पैसेजेस आर एब्सोल्युटली गिविंग फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल दोज स्टूडेंट्स
who wish to get there. The only thing you have to do is to download our app, that is Success Ahead Education Services from Play Store. आप उसमें डाउनलोड करें and give a WhatsApp message to us at 93296-20356, and you will be finding all those questions in the form of practice current affairs to be given to you absolutely at no cost. Thank you so much. This is a Diwali gift, you can say. Thank you so much. May God bless you. Bye bye. See you tomorrow.